Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Snigdha Bhatnagar. और अगर आप मेरे channel पर नए हैं so please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So today's video is a lot different and this is my first makeup video I think. Yeah, someone suggested me to do a makeup tutorial, मतलब जो मेरा everyday makeup या go to makeup look है वो मैं करूँ. So here I am doing that and I am excited क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ फिल्म नहीं करा है, ना कुछ ऐसा शूट करा है. So let's not waste more time and let's get started. पहले हम हेयर डाई करने वाले हैं. So I have this hair band. So मैंने अपना से फेस वॉश करा हुआ है एंड अब इसके बाद मैं सबसे पहले अप्लाई करने वाली हूँ दिस. सो फॉर टोनर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बेला वीटा ऑर्गेनिक रोज वाटर टोनर एंड दिस स्मेल्स अमेजिंग गाइज. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई सम एंड इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे. सो नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई दिस मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड 10% एंड प्लस जिंक सीरम. दिस इज़ वेरी गुड गाइज. तो मेरे को रिसेंटली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एक्ने और पिम्पल्स वगैरह हो गए थे. सो मैंने अपना थोड़ा स्किन केयर मैंने अच्छे से स्टार्ट करा. सो इट इज़ अ मस्ट गो. मतलब सीरम आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए. दिस इज़ द सीरम. अपने पाम के बीच में थोड़ा सा डालूँगी. देन आई एम जस्ट गोना अप्लाई दैट टू माई फेस. कभी कभी मैं दो सीरम्स भी मिक्स कर लेती हूँ. लाइक मैंने जैसे अभी नाइसिनामाइड यूज़ करा है, देन आई एम गोना यूज़ विटामिन सी. तो ऐसे करके मैं दो सीरम भी कभी कभी मैं फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ. सो इसके बाद आई एम गोना अप्लाई सनस्क्रीन. दिस इज़ फ्रॉम न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन. सो आई एम गोना अप्लाई दिस मच ऑन माई फेस एंड नेक. गाइस दिस सनस्क्रीन इज़ वेरी गुड. मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइट आपके फेस में नहीं दिखता है बिल्कुल भी. दिस इज़ परफेक्ट. सो माई सनस्क्रीन इज़ ऑन. नाउ आई एम गोना अप्लाई सम मॉइस्चराइज़र. सो दिस इज़ गार्नियर रिंकल लिफ्ट मॉइस्चराइज़र. माई थर्ड और फोर्थ टब एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट फिनिश. आप देख सकते हैं एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद. दिस वॉज रिकमेंडेड बाय मालविका सितलानी. उनका मेकअप इज़ लाइक oh my god. So उनके मैंने रिकमेंडेशन से ट्राई करा. दिस इज़ वेरी गुड. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई सम. As before makeup, make sure you prep your skin very well. Prepping is done, it's time for some concealer. So I'm using this Maybelline Fit Me concealer in the shade 20 Sand. And guys, Maybelline की रेंज Fit Me वाली it's very good. मतलब ड्रग स्टोर में it is the best. So I'm just gonna apply some under my eyes, nose के ऊपर थोड़ा सा and here and on my forehead. Guys, do I look like a booth? So with the help of a blender, I'm gonna blend my concealer. Make sure आप अंडर आई को बाद में कंसील करो क्योंकि उसके बाद वो सेट होने लग जाता है कंसीलर. सो थोड़ा सा जो कंसीलर ब्लेंडर पे बच जाता है आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस सो दैट इसका एक नेचुरल लुक है. सो नाउ आई एम गोना यूज दिस फिट मी मैट प्लस पोरलेस पाउडर. दिस इज कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज वार्म न्यूड. जस्ट गोना अप्लाई अंडर माई आईज. फॉर ब्राउज जनरली व्हाट आई डू इज़ मेरे पास जो भी पुराना मस्कारा पड़ा होता है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाता है. सो आई यूजुअली डू कि मैं इसको अपने ब्राउज पे लगा देती हूँ. It's a bit weird mascara को eyebrows पे लगाना, but I don't know और कोई करता है कि नहीं करता, but I definitely do this. So now I'm gonna apply this Lakme का Insta Liner. This is the best guys. इसका एक matte finish होता है, glossy नहीं है and it is super good. Now let's apply some eyeliner. So guys, this is what I generally do. मतलब इसे थोड़ा कम ही करती हूँ, बट आज मैंने ज़्यादा थोड़ा विंग कर दिया है. It's done. You can see how this looks.
Mascara, I have this Maybelline ka lash fit mascara, and guys this is super good. This is my favorite mascara, and इसका जो lift होता है eyelashes में, it is super good. I'm just gonna show you. So guys, you can see the difference literally. I'm obsessed with this white pencil. ये मैं अपने waterline में लगाऊंगी अब. सो गाइज मेरी जो आईज है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है, तो मेरी आईज को एनहेंस करने के लिए आई अप्लाई दिस. इट्स टाइम फॉर सम cheek tint, so I have this tint or whatever you can say. So I have this Maybelline ka Master Strobing cream, and it's very good guys, literally. You can like see this. So I'm just gonna apply some on my cheekbone and some on my pinch of nose and thoda sa chin pe. I usually tap it with my fingers only. इसके लिए मैं कोई blender यूज़ नहीं करती हूँ. So guys, the next step is this Maybelline New York ka lipstick. This is Rosy Peach 805, and this is how it looks. It's very pinky type of color. So I'm just gonna apply some. This is the lip shade. So the final step is to set your makeup, and Faces Canada का Ultimate Pro Makeup Fixer, and this is how it looks. मैंने इसको recently खरीदा and I haven't used it, so I'm gonna use this now. So guys, that's it for this makeup look, and this is my like literally go to makeup, and इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर करती हूँ. अभी तो मेरे को दिखाने में टाइम लगा है, but I am a pro for this, ठीक है. And I don't apply foundation on daily basis. अगर मुझे किसी इवेंट में जाना होता है या किसी फंक्शन में जाना होता है, मतलब ज़्यादा लोगों के बीच जा रही हूँ, तब I apply foundation. So guys, let me know how you guys liked it. You guys can see how this looks in the sunlight, and it looks pretty.